इन गांव-गांव पानी के संकट के कारण खाली हो रहे हैं और तबाही मची हुई है। नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि 60 करोड़ भारतीय गंभीर जल संकट से गुजर रहे हैं। 60 करोड़ यानी भारत की आधी आबादी पानी के गंभीर संकट से घिरी हुई है। अगले साल तक 21 शहरों में पानी का भीषण संकट आने वाला है। इन शहरों के 10 करोड़ लोग अगले साल से ही पानी के संकट की चपेट में आ जाएंगे और 2030 तक भारत की आबादी का 40% हिस्सा पानी से वंचित हो जाएगा, उसे पानी नहीं मिलेगा। Earlier, Bangalore had some water at 400 feet. Now it has reached 1,000 feet. Now we will probably reach layers where we will have arsenic and other contamination in the groundwater. So we can't go, endlessly deeper and deeper. Now the question is, we can't even provide good water services now to Delhi's current customers, which is maybe about 20 million. How we're going to handle 35 million only in less than 20 years. We need some backup here. We have level 6B water restrictions where you are not allowed to use the municipal drinking water for anything else except drinking. You cannot wash your car, you cannot water your garden. We are saying, water for all or the city must fall. Water for all or the city must fall. Panzi, Kaltan, Panzi. Water is necessary for life. It doesn't mean if you don't have money, you can't get water. The bank Goldman Sachs predicted that water would be the petroleum of the 21st century. And private interests like hedge funds have started buying up water, prompting fears that they'll take advantage of scarcity to turn a profit. And if that sounds like a villain's plot in a James Bond movie, that's because it was. As of this moment, my organization owns more than 60% of Bolivia's water supply. The rapid increase in greenhouse gases in the atmosphere has warmed the planet at an alarming rate. While Earth's climate has fluctuated in the past, atmospheric carbon dioxide hasn't reached today's levels in hundreds of thousands of years. Well, we start with the heat wave that continues to batter India. Extreme temperatures across the north and the east of the country have caused hundreds of deaths. In the south, the searing hot spell has led to severe water shortages. The situation has reached a crisis point in Chennai. This is India's 6th biggest city. Well, Diwali or no Diwali, pollution levels in Hyderabad remain always high. The most pertaining cause for the same is increasing levels of emissions of smoke by the vehicular traffic. Almost 1,000 vehicles are added daily on the road. दिल्ली एनसीआर में नदी किनारे उगने वाले फल और सब्जियां आपकी जान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी हैं और ये दावा किया है नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी नीरी ने। बासी सब्जियों को लगाते वो ताजी जैसी लग जाती है, ये हम ही नहीं करते, सारा ही जमींदार करता जो सब्जी को बोता है। सरकार ने देश के कई हिस्सों में सब्जियों, फलों और दूध के सैंपल की जांच कराई तो 18% से ज्यादा नमूनों में खतरनाक कीटनाशक मिले। भारत में जिस तरीके से पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है, उसमें चाहे फल हो, सब्जियां हो या आपके खाद्यान्न हो, सब में भारी मात्रा में केमिकल्स का उपयोग होता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 5 केमिकल हैं जिसका उपयोग किया जा रहा है जो कैंसर जिससे हो सकता है, और वो पांचों के पांचों भारत में उपयोग होते हैं। हमारे देश में कई सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जो बाकी देशों में बैंड है। ऐसे 67 पेस्टिसाइड्स इंडिया में है, ये सरकार का आंकड़ा है। वो पेस्टिसाइड्स अब भी वो हमारे खाने में रेसिड्यूज बन के अभी भी वो आते हैं वो खाने में। मतलब वो बैंड है, उनका इस्तेमाल आजकल नहीं होता, लेकिन वो इतने जिद्दी हैं कि वो मट्टी में, पानी में घुल मिल गए हैं और वो आज भी हमें हमारे पेट में जाते हैं। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि आज भी वो खेती में कैसे भी इस्तेमाल हो रहा है। पे ऑलमोस्ट एवरी डे लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने तो ना तंबाकू खाया ना मैंने शराब पी, मुझे कैंसर क्यों हुआ। उसका बहुत बड़ा रीज़न है जो हम सब्जी जिसको हम समझते हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स जो बड़ी हेल्दी फूड में माना जाता है, उसमें ये बड़े हुए हैवी मेटल्स जो कि पोल्यूटेड वाटर, इंसेक्टिसाइड के यूज़, पेस्टिसाइड के यूज़ और आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट्स के यूज़ की वजह से ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसकी वजह से कैंसर होने की चांसेस बहुत बढ़ रहे हैं। This is our life with bees.
And this is our life without bees. More than 1/3 of the world's crop production is dependent on bee pollination. Among the top 100 crops that make up 90% of people's diets around the world, bees are responsible for pollinating more than 70 of them. An unprecedented decline in nature threatening humanity. That's the conclusion of the first United Nations report on biodiversity. 1 million species are at risk from extinction from climate change, overfishing, and pollution. There has been a new United Nations report which has looked at biodiversity loss for the first time in the world. So it's looked at 15,000 sources of information, most of which are scientific, to come to the conclusion that we've changed 75% of the land on Earth. We need to link the climate emergency to the biodiversity crisis. These scenarios show that what happens to biodiversity over the coming century is really down to us as a society. If we don't do anything to mitigate against climate change, and we keep using the land as carelessly as we are at the moment, then we'll have loads more biodiversity loss.